Hello, my dear friend. I hope you are doing great. Welcome back to my channel. If you have not subscribed it, please subscribe it, press the bell icon, hit the like button also. Friends, I am here to assist you for the UPSC preparation. Whatever I am providing here, that is the precise study for the UPSC and all the state PCS examination. Friends, do not worry about the preparation because whatever I am providing here, that is the data from the prominent institution. I am providing all the data within the free amount here. Come along with me and reach up to the zenith of your career. Okay friends, let's get started. Today questions. Today I will talk about the 35th video of the UPSC preliminary mock test series. स्टार्ट करते हैं। ये वीडियो हिंदी एंड इंग्लिश में रहेगी और आपको क्वेश्चन साथ के साथ अटेम्प्ट करते हुए रहना है ताकि आपको आने वाले एग्जामिनेशन में कोई इशू नहीं हो। स्टार्ट करते हैं। विद रेफरेंस टू द इंडिया बांग्लादेश रिलेशन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज और आर करेक्ट। द फर्स्ट वन इज बांग्लादेश इज इंडिया बिगेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर इन साउथ एशिया। द सेकेंड स्टेटमेंट इज द एक्सरसाइज Sampriti and Milan are the joint drills regularly conducted between the armed forces of India and Bangladesh. Third one is Maitri Setu built over the Feni River connects West Bengal and Bangladesh. Select the correct answer using the codes given below. आप अपना आंसर मार्क कीजिए। A is first only, B is first and second, C is second and third, or D is first, second and third. The correct answer is B. The year 2021 marks the golden jubilee, means 50 years of the 1970 India-Pak war that led to the liberation of the Bangladesh. Bangladesh 1971 में आज़ाद हुआ था. The first statement is correct. Bangladesh is the India biggest trading partner in the South Asia. India is the second biggest trading partner of the Bangladesh. In the financial year 2019 and 20, India exports to Bangladesh is near about the $8.2 billion. Imports were $1.26 billion. Second statement is correct. The armed forces of the both national regularly conducted joint drill exercise through like Sampriti and Milan. India has extended near about the 500 million line of road to the Bangladesh for the defense import from India. Third statement incorrect. The bridge Maitri Setu has been built over the Feni River which flows between the Indian boundary in Tripura state and Bangladesh. त्रिपुरा से बांग्लादेश को जोड़ता है। मैत्री सेतु नाम है इसका। 1.9 किलोमीटर ब्रिज ज्वाइन द सबरूम इन इंडिया विद द रामगढ़ इन बांग्लादेश। रामगढ़, आपको ये ध्यान रखना है कि रामगढ़ इंडिया जैसा नाम लगता है बट ये बांग्लादेश में है, सबरूम त्रिपुरा में है। It is poised to herald a new chapter of the trade and people movement between India and Bangladesh. With this inauguration, Tripura is said to become a gateway of the northeast and with access to the Chittagong port of the Bangladesh, which is 80 km from the Sabroom. Next question पे चलते हैं. With reference to the Indian model of secularism, consider the following statement. First one is it is a compatible with the idea of the state-supported religious reforms. Second one is it is the against institutionalized religious dominance. कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है? आप अपना आंसर मार्क कीजिए। A is first only, B is second only, C is first and second, or D is neither one nor two. The correct solution is C. First statement is correct. Indian model of secularism is compatible with the idea of the state-supported religious reforms. For example, India has criminalized the practice of the triple talaq. जैसे क्या होता है इंडियन मॉडल ऑफ सेकुलरिज्म क्या होता है? धर्मनिरपेक्षता। कंपेटेबल विद द आइडिया ऑफ स्टेट सपोर्टेड रिलीजियस रिफॉर्म्स। स्टेट सपोर्ट करता है रिलीजियस रिफॉर्म्स लाने में, जैसे ट्रिपल तलाक को क्रिमिनलाइज घोषित कर दिया गया है। सेकेंड स्टेटमेंट करेक्ट है। The Indian model of the secularism is against the institutionalized religious domains of infra-religious and intra-religious nature. Thus, it opposes the oppression of the Dalits in Hinduism, the discrimination against women within Indian Islam and Christianity. It also perceives and opposes the possible threats that a majority community might pose to the right of the minority community. Hence, provides minorities with the certain rights and protection.
नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं. With reference to the sounding rockets, consider the following statement. First one is, these are the single or double stated solid propelled rockets. Second one is, they are used in probing the upper atmospheric regions. Third one is, currently India does not have any operational sounding rockets. कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है, आप अपना आंसर मार्क कीजिए. ए फर्स्ट ओनली, बी सेकेंड एंड थर्ड, सी फर्स्ट एंड सेकेंड और डी फर्स्ट एंड थर्ड. इसका सॉल्यूशन सी है. साउंडिंग रॉकेट्स आर one or two stage solid propelled rockets. They serve easily affordable platforms to test or prove prototype of the new components or subsystem intended for use in launch vehicle and satellite. Satellite and launch vehicle में यूज होते हैं. साउंडिंग रॉकेट्स बोलते हैं. फर्स्ट स्टेज या टू स्टेज सॉलिड प्रोपेलेंट रॉकेट होते हैं. इजिली अफोर्डेबल प्लेटफॉर्म टू टेस्ट और प्रूव प्रोटोटाइप ऑफ द न्यू कंपोनेंट्स. एंड सेकेंड स्टेटमेंट इज करेक्ट. They are used for probing the upper atmospheric region and for research. While balloons cannot float above approx 50 km, many satellites can flow over to 250 km in altitude. Thus, only sounding rockets are capable directly observing space between the two altitudes, which is called the mesosphere, thermosphere or ionosphere. थर्ड स्टेटमेंट इनकरेक्ट है. इसरो स्टार्टेड लॉन्चिंग इंडिजिनियस साउंड रॉकेट्स फ्रॉम 1965 onwards and it contributed to mastering the solid propellant technology. Currently, India has 3 versions offered as operational sounding rockets, which covered a payload near about the 8 to 100 kg and apogee range of 80 to 75 km. नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं. With reference to the role of the women during the period of the Indian freedom struggle, which of one of the following statement is incorrect? A. During the Tebhaga movement, Nari Bahini or Women Brigade were formed in order to resist colonial police. B. Kalpana Dutt joined the Surya Sen Indian Republic Army Chittagong branch in 1931. C. Women Indian Association, the first women association at all India level, was established under the leadership of the Srijani Naidu. D. Aruna Asaf Ali hosted the national flag at Gwalior Tank Maidan during the Quit India movement. The correct answer is C. First, A correct है. The Tebhaga movement saw widespread independent action of the landless and poor peasant women. तेभागा मूवमेंट में क्या था? वाइड इंडिपेंडेंट लैंडलेस एंड पुअर पेसेंट वुमेन की बात की गई है, बिलोंगिंग टू द दलित एंड ट्राइबल कम्युनिटीज. Through their own initiative, they formed Nari Bahini or women brigades to resist the colonial police with whatever weapon they could lay their hands on. और इसका सी आंसर इसलिए करेक्ट है क्योंकि इसमें इनकरेक्ट स्टेटमेंट पूछा गया था. कौन सा है? बी है करेक्ट. कल्पना दत्त ज्वाइन द सूर्या सेन इंडिया रिपब्लिक आर्मी Chittagong branch in 1931. The Surya Sen India Republic Army Chittagong branch was responsible for conducting Chittagong Army raid in 1930. C statement incorrect है. In 1917, the Women Indian Association was started at Adyar, Madras by the enlightened European and Indian ladies, the most important being Margaret Cousins, Annie Besant, Kamala Devi Chattopadhyay and Muthulakshmi Reddy. D correct है. Aruna Asaf Ali was popularly known as the Grand Old Lady of the Indian movement. In 1932, she went on hunger strike, Tihar jail, against the mistreatment of the political prisoners, which led to the improvement in their living conditions. She is also known as hosting the Indian flag at Gwalior Tank Maidan in Mumbai during the Quit India movement. नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं. Which of the following statements is or are correct regarding the pulsars? They are rapidly rotating neutron stars. Second, they can radiate light in the multiple wavelength. Third, they help in studying the gravitational wave. कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है? आप अपना आंसर मार्क कीजिए. ए है फर्स्ट ओनली, बी है सेकेंड एंड थर्ड, सी है फर्स्ट एंड थर्ड और डी है फर्स्ट सेकेंड एंड थर्ड. सॉल्यूशन इज डी करेक्ट. Pulsars are rapidly rotating neutron stars that emit radio frequency pulses. Neutron stars are formed when a massive star runs out of the fuel and collapses. Second statement is correct. Pulses can radiate light in the multiple wavelength from the radio waves all the way up to the gamma ray, the most energetic form of the light in the universe.
थर्ड स्टेटमेंट करेक्ट है, साइंटिस्ट यूज pulsars to study extreme states of the matter, gravitational waves, search for planets beyond earth solar system and measure cosmic distance. कॉस्मिक होता है जो ब्रह्मांड की चीज़ें वो बोलते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन है, जैसे न्यूज़ पेपर है, पैम्पलेट है, फाउंडर है. लेबर किसान गैजेट शाहजानंद सरस्वती, गांधी लेनिन ऐसे डांगे. थर्ड है नवयुग मुजफ्फर अहमद. फोर्थ है इक्लिब नजरुल इस्लाम. कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट मैच है, आप अपना आंसर मार्क कीजिए. ए है फर्स्ट एंड थर्ड, बी है सेकंड एंड फोर्थ, सी है सेकंड एंड थर्ड और डी है फर्स्ट एंड फोर्थ. तो इसका सॉल्यूशन सी है. आफ्टर द बोल्शेविक रिवॉल्यूशन 1917 मैनी इंडियंस वर इंस्पायर्ड बाय द सोशलिस्ट एंड कम्युनिस्ट आइडिया. एज ए पावरफुल लेफ्ट विंग ग्रुप डेवलप्ड इन इंडिया इन लेट 1920-1930. They used the press as a means to transmit their idea to the masses. First pair correct match है. Labour Kisan Gazette was stated in the M. Singarailu in Madras. He also founded the Labour Kisan Party of the Hindustan in 1923. B statement correct match है. श्रीपद अमृत डांगे ऐसे डांगे wrote pamphlet titled Gandhi versus Lenin in 1922. Later, he also launched a weekly journal called Socialist, which was the first Indian Marxist journal. Third statement correct है. Muzaffar Ahmad brought out Navyug, a Bengali daily. Later on, along the Nazrul Islam, he founded Langil magazine. Fourth statement incorrect match है. Iqlib, a famous Lahore-based Urdu newspaper, was published by Ghulam Hussain. Inqilab. Next question पे चलते हैं. In the context of the Indian puppetry, consider the following statement. They are kind of the road puppets. Second, the puppets are made of single piece and have no joints. They are made of wood. कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है, आप अपना आंसर मार्क कीजिए. ए है पुतुल नाच, बी यमपुरी, सी रावण छाया, डी पावाकुट्ठू. बी आंसर इज करेक्ट. फर्स्ट इनकरेक्ट मैच है. द ट्रेडिशनल रोड पपेट फॉर्म ऑफ द वेस्ट बंगाल इज नोन एज द पुतुल नाच. वेस्ट बंगाल से पुतुल नाच. These puppets have mostly three joints. The head supported by the main rod and unjoined at the neck. Both hands attached to the rods are joined at the shoulders. Second statement correct है. The traditional rod puppet of the Bihar is known as Yampuri. These puppets are made of wood, unlike the traditional rod puppets of the West Bengal and Orissa. These puppets are in one piece, have no joints. As these puppets have no joints, the manipulation is different from the other road puppets and requires greater dexterity. C statement incorrect. The most theoretically exciting puppetry art is Ravan Chaya of Orissa. The puppets are made of deer skin and conceived in bold dramatic poses. The puppets are in one piece, have no joints, they are not colored, hence throw opaque shadows on the screen. Manipulation requires greater dexterity since there are no joints. D incorrect है. In Kerala, the traditional globe puppet play is called Pavakottu. It came into the existence during 18th century. Pavakottu, the height of the puppet varies from 1 foot to 2 feet. 1 feet to 2 feet है. The head and the arms are carved of the wood and joined together with the thick cloth and but the stitch into the small bag. नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं. तो आपको याद रखना है कि बिहार की तो जो इसके अलग अलग नाम है, जैसे मान लो केरला की तो पावाकोट्ठू है और रावण छाया आपकी उड़ीसा की है. बिहार की वेस्ट बंगाल की एंड उड़ीसा की कौन सी है, यमपुरी है, बिहार में भी है ये. तो इसको आपको याद रखना है कि वेस्ट बंगाल में पुतल नाच बोलते हैं. इनके नामों को आपको ध्यान रखना है, इससे लंबे टाइम तक याद रख पाओगे. Next question है. Consider the following statements with reference to the dugong, a mammal found in India. It is a herbivorous mammal that lives exclusively in the sea. Second, it is found only in the eastern coastal water of India. Third one is its survival is threatened by the ocean floor trawling. मतलब कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है? ट्रोलिंग होता है जो फिश पकड़ने वाला बड़ा ट्रोलर. ए है फर्स्ट ओनली, बी है फर्स्ट एंड सेकंड, थर्ड, सी है सेकंड एंड थर्ड और डी है फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड. तो इसका सॉल्यूशन बी है. Dugong, also known as the sea cow, is one of the 4 surviving species in order to Sirena. It is the only existing species of herbivorous mammals that lives exclusively in the sea.
सेकेंड स्टेटमेंट इनकरेक्ट है। अकॉर्डिंग टू द सर्वे रिपोर्ट टू द JSI, dugongs in India are found in the Gulf of the Mannar in Tamil Nadu, Andaman and Nicobar Island, and Gulf of Kutch in Gujarat. Hence, they are also found on the west coast as well. Third statement correct है। dugongs graze on the seagrass and loss of the seagrass beds due to ocean floors. Trawling is one of the most important factor behind the decreasing dugong population in most parts of the world. Additional information क्या है? They are listed as the vulnerable at the IUCN list and protected in under Schedule 1 of the Wildlife Protection Act. Next question है with reference to the impeachment process of the President of India. The first statement is the meaning of the phrase violation of the Constitution is defined in the Constitution. Second, the impeachment charges can be initiated only Lok Sabha. It is a quasi-judicial process in which nominated member of the parliament can participate. कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है? आप अपना आंसर मार्क कीजिए। ए फर्स्ट एंड सेकंड, बी सेकंड, सी थर्ड और डी है फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड। तो इसका सॉल्यूशन सी है। द प्रेसिडेंट होल्ड ऑफिस फॉर ए टर्म ऑफ द 5 years, but he or she can removed from the office even before the completion term through an impeachment process. Article 61 of the Indian Constitution deals with the impeachment process of the president. First statement is incorrect. The president can be removed for violation of the constitution, but the constitution does not define the phrase violation of the constitution. मतलब इसकी definition दी गई नहीं है संविधान में। Second statement incorrect. The impeachment charges can be initiated in either house of the parliament, provided these charges are signed by the 1/4 of the total member of the house. In this process, one house frames the charges and the other house investigates the charges. थर्ड स्टेटमेंट इनकरेक्ट है। करेक्ट है। इम्पीचमेंट ऑफ द प्रेसिडेंट इज ए क्वाजी जुडिशियल प्रोसेस इन विच बोथ इलेक्टेड एंड नॉमिनेटेड मेंबर ऑफ द पार्लियामेंट कैन पार्टिसिपेट, बट इलेक्टेड मेंबर ऑफ द असेंबली डू नॉट पार्टिसिपेट थ्रू द इन द इलेक्शन प्रोसेस ऑफ द, मतलब जो असेंबली के स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली के बंदे पार्टिसिपेट नहीं करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। इलेक्शन में पार्टिसिपेट करते हैं, इम्पीचमेंट में पार्टिसिपेट नहीं करते स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली के मेंबर। विद रेफरेंस टू द डोम्सडे ग्लेशियर रिसेंटली इन द न्यूज, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। इट इज़ द वर्ल्ड लार्जेस्ट ग्लेशियर लोकेटेड इन द हिंदू कुश रीजन। सेकेंड, इट इज़ सिग्निफिकेंट एज इट स्लोज द आइस बिहाइंड इट फ्रॉम फ्रीली फ्लोइंग इन टू द ओशियन। थर्ड, इन दिस ग्लेशियर द आइस सेल्फ इज थिनिंग रैपिडली एंड द ग्राउंडिंग लाइन इज रिट्रीटिंग। कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है? आप अपना आंसर मार्क कीजिए। ए है फर्स्ट ओनली, बी है सेकेंड एंड थर्ड, सी है सेकेंड एंड डी है फर्स्ट सेकेंड एंड थर्ड। इसका सोल्यूशन बी है। रिसेंटली रिसर्चर ऑफ द यूनिवर्सिटी ऑफ द गोटेनबर्ग, स्वीडन में है ये, फाउंडेड दैट फियर्स रिलेटेड टू द थॉट मेल्टिंग आर वर्स देन द प्रीवियस थॉट ओइंग टू द सप्लाई ऑफ वार्म वाटर फ्लोइंग अंडरनेथ एट ए रेट ऑफ अंडर एस्टिमेटिंग इन द पास्ट। The researcher used an uncrewed submarine to go under the Thwaites Glacier front to make observation. Thwaites Glacier, also known as the Doomsday Glacier, is located in the western Antarctica, flowing onto the Amundsen Sea बोलते हैं, Amundsen. It is 120 km wide at the broadest, fast-moving glacier that is melting fast over the years. Its melting already contributes 4% of the global sea rise in the air. First statement incorrect है। Lambert Glacier, not the Thwaites Glacier. अंटार्कटिका इज द बिगेस्ट ग्लेशियर इन द वर्ल्ड, तो लम्बर्ट ग्लेशियर सबसे बड़ा है, आगे थ्वॉइट्स है। सेकेंड स्टेटमेंट करेक्ट है। थ्वॉइट्स ग्लेशियर इज सिग्निफिकेंट एज इट स्लोज द आइस बिहाइंड इट फ्री फ्रॉमली इनटू द ओशियन. It collapse could potentially take the rest of the West Antarctic ice sheet within it, causing an approximate 3-meter rise in the global sea level. Third statement correct है. In this glacier, the ice shelf is thinning rapidly on the grounding line is retreating. The grounding line is placed below a glacier at which ice transition between resting completely on bedrock to floating on oceans as on ice shelf. The location of the line is pointed to the rate of the retreat of a glacier. ये आपका हिंदी में आंसर प्रोवाइड किया हुआ है. That is all for today. I will come tomorrow with more questions. Please share my video among your friends so that they can get benefited. Thanks for watching. Bye.